Hello everyone. Again I am here to discuss the new topic of second chapter, that is environmental pollution. This is the last topic of our chapter. In earliest video we had discussed the solid waste, sources of solid waste, then effects of solid waste, but one topic is remain from that video, that is solid waste management. In this video I am completing that solid waste management, but so many diagrams are there, so many cycles are given in this portion, so I am presenting this portion by some slides. I have started the presentation. Solid waste management hierarchy. Second, solid waste management hierarchy. In this diagram you can see the reduce, reuse, recycle, recover and disposal. This diagram is divided into 5 content. This diagram is divided into 5 content. First one is the reduce. Reduce means to minimize the substance. Second, reuse. Reuse is the use material more than once. Matlab, for example, if I have any bottle, that can be reused for the decoration purposes or reuse for any other purposes. Next is use material to make new products. ठीक है, तो पुराने किसी चीजों से हम अगर नया कुछ बना सकते हैं तो वो हमारा इसमें रिसाइकल में आ गया. वन मोर वीडियो इज देयर दैट इज रिलेटेड विथ कंपोस्ट, वो मैंने सेंड किया हुआ है, तो यहाँ पे कंपोस्ट भी मेंशन किया हुआ है. एंड देन आफ्टर दैट रिकवरी आप करनी है. एंड डिस्पोजल में आप देखेंगे सबसे कम पोर्शन जो है दैट इज कवर्ड अप इन डिस्पोजल, मीन्स सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, रिड्यूस्ड. नेक्स्ट वन इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. देयर आर 3 मेन कंटेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट: रिड्यूसिंग द जनरेशन ऑफ वेस्ट, देन रीयूजिंग, देन रिसाइकलिंग. तो ये तीनों चीजें हमको पता है, इसको हम 3 R's बोलते हैं. रिड्यूसिंग द जनरेशन ऑफ वेस्ट मीन्स मिनिमाइज द वेस्ट प्रोड्यूस, देन रिड्यूसिंग द वेस्ट, रीयूजिंग द वेस्ट मीन्स जितना भी वेस्ट है दैट कैन बी रीयूज. हम उसको नए वेस्ट से वी कैन रीयूज द न्यूज़पेपर फॉर द डेकोरेटिव पर्पजेस, वी कैन रीयूज द न्यूज़पेपर फॉर अदर पर्पजेस. रिसाइकलिंग, थर्ड वन इज द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट. नाउ रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, एक चीज से हमको कुछ और नई चीज बनानी है. नाउ अ डे सो मेनी थिंग्स आर रिलेटेड विद दिस रिसाइकलिंग. जो ओल्ड न्यूज़पेपर से कुछ आइडल्स बनाए जाते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो रिसाइकलिंग, पेपर को मोल्ड करके. सो रिसाइकलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हाइल वी टॉक अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. Next slide is about the commonly recycling material. In this chapter so many diagrams are given, and that's why I am presenting this slides, because it is very difficult to discuss the diagrammatic representation orally. So in this slide you can see, this is given in your chapter, you can see how the paper can be processed. Paper processing is there, means waste paper that is collected by the corporation or collected by any other sources. Then sorting of paper, sorting hota hai. After that washing with the chemical, after trimming them into pieces, उसको बारीक करके फिर उसका वॉशिंग एंड ट्रिमिंग होता है. फिर रिपल्पिंग मीन्स उसको दबा के रखते हैं, पल्पिंग करते हैं उसको, दैट इज रिपल्पिंग. आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज इट इज अगेन पल्प जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू पेपर, देन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देन इट इज रीयूज. बेसिकली दैट वेस्ट पेपर इज रीयूज फॉर द न्यूज़पेपर. जो न्यूज़पेपर हमारे घर में आता है दैट इज नॉट सो ट्रांसपेरेंट, दैट इज नॉट सो वाइट, बिकॉज इट इज एन reusable paper. So it is very complicated method अगर देखा जाए तो. So when you are throwing the paper, newspaper or any kind of paper, तो उसको fold करके ना फेंके, उसको फाड़ के फेंके, so it can be go to the further process. Next one is the recycling of glass. When we throw the glass material, then it is collected by the some municipal corporation or collected by some other method. कुछ लोग आप देखे होंगे कि जो बॉटल्स कलेक्ट करते हैं वो भी एक पर्टिकुलर जगह पे कलेक्ट होती है. उसके बाद में जो है उसका ग्लास जो है उसके कलर के हिसाब से, उसके थिकनेस के हिसाब से दैट कैन बी सेपरेटेड. आफ्टर सेपरेटेड इट गोज टू द इंडस्ट्रीज एंड क्रशिंग एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लास इज देयर. देन depending on the melting of that or color of the glass,
that glass is again converted into different instruments, means bottles बनेंगी या कुछ और चीजें जो बना सकते हैं, and then again it is distributed to the community. So cycle is completed. Next one is the metal, recycling of metal. ये थोड़ी difficult process है because particular industries are there for the recycling of metal. When we throw the scrap metal, it is collected by the some हम उसको बोलेंगे कुछ agencies बोल सकते हैं, collected by some agencies and then it is separated. Basically metals में भी बहुत सारे type के metals होते हैं, तो it is separated by its size, shape and type, and after separation again it goes to the melting and purification, क्योंकि metal कैसे purify होगा, by melting itself, purification, और फिर उसका जो melting के बाद में it is again converted into some new metal products, कुछ different types के pots बनेंगे या कुछ भी वो material, and then it is again circulated to the community and the cycle is totally completed. Next one is the recycling of plastic. Recycling of plastic बहुत important है nowadays because we are throwing so many plastic amount, huge amount of plastic. Lots of things in our family are made up of plastic. So plastic is collected by some agencies and it is then sorting of plastic is there, means thick plastic है, कितना mm size है उसका, according to the size and shape of those plastic can be separated, and then सेपरेशन के बाद में उसका श्रेडिंग होता है. श्रेडिंग ऑफ प्लास्टिक मीन्स उसके बॉल्स बनते हैं, प्लास्टिक नोड्यूल्स बनते हैं, एंड आफ्टर दैट प्लास्टिक नोड्यूल्स इट इज अगेन स्प्रेड अप टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में. कुछ बकेट इंडस्ट्रीज में भी देयर, बॉटल इंडस्ट्रीज में भी देयर, सो इट इज डिवाइडेड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड दोज मटेरियल अगेन एंटर्स टू द civilization or it enters to the community, and again the cycle of plastic recycling is completed. In this cycle only the thick plastic is recycled. Plastic जिसको हम बोल रहे हैं, here is no process for the polythene. This process is not related with the polythene. Next is composting. It is separately mentioned in our chapter. Composting में this is vermi composting. Okay, composting का detail मैंने composting जो video है उसमें है. Composting means रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिंपलर फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म में. तो उसका एक ब्यूटीफुल ब्लैक कलर ह्यूमस फॉर्म होता है दैट कैन बी यूज और फॉर द गार्डनिंग पर्पजेस और फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पजेस. नाउ वर्मी कंपोस्टिंग, लेयर्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग आर गिवन देयर. जो ब्रोकन ब्रिक्स आर देयर, देन कोर्स सैंड, अर्थवर्म्स, एनिमल डंग, ड्राई लीव्स एंड किचन वेस्ट. एवरीथिंग इज सिमिलर टू द कंपोस्टिंग, सिंपल कंपोस्टिंग, बट इन दिस प्रोसेस वी आर ओनली एडिंग द अर्थवर्म. यही एक डिफरेंस है वर्मी कंपोस्टिंग एंड कंपोस्टिंग में, बाकी सारी चीजें सिमिलर है. ठीक है, तो सो मेनी लेयर्स आर वर्मी कंपोस्टिंग्स आर गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट इज द रिकवरिंग एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट. नाउ ये तो हमारा रिसाइकलिंग हो गया, रीयूज हो गया, बट अभी हम क्या करने वाले, रिकवरिंग एनर्जी. रिकवरिंग एनर्जी मीन्स जो भी वेस्ट है तो उसको हम उससे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, किस तरह से कर सकते हैं, दैट इज रिकवरिंग एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट. सो हियर सो मेनी टाइप्स आर गिवन. एनारोबिक डाइजेशन. एनारोबिक डाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिग्रेडेड इनटू द बायोगैस प्रोडक्ट. मतलब एनारोबिक डाइजेशन में दैट काउ डंग मे बी देयर और द रेसिड्यू फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड कैन बी यूज फॉर द बायोगैस पर्पजेस. दैट इज एनारोबिक डाइजेशन एंड दैट इज वेरी इफेक्टिव मेथड इन रूरल एरिया टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट. आफ्टर दैट रिफ्यूज derived fuel, RDF. In this RDF is slightly different than the anaerobic digestion. When the solid waste contains large amount of combustible, it can be used as a fuel. मतलब उसमें जलने वाली चीजें अगर ज्यादा है तो उसको हम एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है. RDF में एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म इसको दिया गया है. एग्रोवेस्ट, जैसे एग्रोवेस्ट आपको पता है जो पत्ते है या ट्विग्स है, ट्विग्स ऑफ लीव्स एंड जो रेसिड्यू होता है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, दैट कैन बी यूज एज ए फायरवुड इन द विलेजेस. तो उसको भी हम RDF बोल सकते हैं. आफ्टर दैट इंसिनरेशन. इंसिनरेशन मीन्स
आपको पता होगा इंसिनरेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इन अ सिलेक्टेड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्ट जो है दैट कैन बी कंबशन इन हाई टेम्परेचर। इंसिनरेशन प्लांट्स, बेसिकली इंसिनरेशन इज यूज इन जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, जो हॉस्पिटल्स वेस्ट होता है, उसमें इंसिनरेशन जो है वो यूज करते हैं। लैंडफिल, वेरी कॉमनली नोन लैंडफिल। लैंडफिल इज नथिंग बट द गार्बेज कैन बी फिल इनटू द होल्स ऑफ द लैंड, जहां पे बड़े बड़े खड्डे हैं वहां पे जो है प्लास्टिक है या कुछ वेस्ट है उसको मोल्ड करके डाल देते हैं, दैट इज लैंड फिलिंग। ये बहुत ही अच्छा मेथड इसको माना जाता है लैंड फिलिंग का, बट इट शुड बी प्रॉपरली डन, अदरवाइज उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होने के चांसेस है। देन आफ्टर दैट द जर्नी ऑफ सॉलिड वेस्ट। ऑफ जर्नी ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है दैट इज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, हम उसको बोलेंगे। Because for the better management of solid waste, every citizen or civilized person should understood the life cycle, means that is the journey of solid waste, कि from where that is generated, waste generated, and वो उसकी life cycle कैसी होगी और वो कितने दिनों तक survive करने वाला है, कितने दिनों के बाद में उसका degradation होगा, and how we can minimize the solid waste, that is the journey of solid waste. Next, after that the silent features of solid waste management rule 2016. So silent features of solid waste management rule 2016 means 2016 में आया था। so many are given there, तो उसमें से कुछ it listed मैंने लिखे हुए हैं। तो no person have right to throw or burn the solid waste which is generated from our house or generated from our commercial area in a public place। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ओपनली रास्ते पे कचरा जला देते हैं, तो वो अगेंस्ट द रूल है, मैनेजमेंट रूल के अगेंस्ट में आता है। देन जनरेटर विल हैव टू प्ले यूजर फ्री टू वेस्ट कलेक्टर एंड स्पॉट फाइन टू इलिटरेट एंड नॉन सेग्रीगेशन। कोई अगर ऐसे कर रहा है, कहीं पे आप कचरा फेंक रहे हो, तो उसके लिए स्पॉट फाइन भी है, वो भी भरना पड़ सकता है। इफ एनीबडी रिलेटेड टू दैट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर्सन है या कोई उनके मेंबर्स है, उसको अगर आप दिख जाते हो कहीं पे कचरा फेंकते हुए, तो आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। All hotels and restaurants should segregate the biodegradable waste and set up a system of collection and utilization for composting. Basically, hotels and restaurants में all the biodegradable material is there, cooked food material is there, so they should have their different compost pit और biomethanation process through उन्होंने अपना कचरा जो है उसको maintain करना चाहिए, उनका collection and segregation should be there. Then every street vendor should keep suitable containers. ये हमको पता है, in every shop we found the big dustbins for the collection of garbage, and that is very essential because it is compulsory for street vendor should keep the suitable container for storage of waste generation. Next, then Maharashtra Plastic Ban is there. In 23rd March 2018, the Maharashtra has banned the plastic. After that, so many things are given in this slide. I think slide is not so visible. So items banned and items expected ये लिस्ट दी हुई है। तो आइटम्स बैन में है, हमारा प्लास्टिक बैग्स बैन हुआ है। देन डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स लाइक स्पून्स, फोक्स, cups, glasses, etc. ban. Then disposable thermocol items are completely banned. Then plastic wrap यूज फॉर द पैकेजिंग और स्टोरेज प्रोडक्ट्स ये भी बैन हुआ है। उसके बाद में क्या चीजें चलने वाली है जो एक्सेप्टेड है, वो है पीईटी बॉटल्स। पीईटी बॉटल्स मीन्स मोर देन 500 ml। देन पैकेजिंग मटेरियल फॉर मेडिसिन चलेगा। देन सॉलिड वेस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में पैकेजिंग चलेगा। उसके बाद में बैग्स, शीट्स यूज फॉर द प्लांट नर्सरीज, थिक बैग्स यूज करते हैं बिकॉज प्लांट में, नर्सरीज में। एंड आई हैव पोस्टेड वन वीडियो रिलेटेड टू दैट, रिप्लेसमेंट ऑफ नर्सरी प्लास्टिक बाय कोकोनट प्लांटर, एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है। देन फूड ग्रेड virgin plastic bags over 50 microns means bags which are more than 50 microns are हमको चलते हैं। देन मिल्क पाउचेस ओवर द 50 माइक्रॉन, 50 माइक्रॉन्स के ऊपर हम सारी चीजें यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्ची।
So I hope you understood by those slides. If you have any doubt or problem, you can comment me in the comment box. And in this way, this chapter is completed. From next video, we have started the third chapter, that is sustainable development. So if you have any doubt, you can comment and like the video. And if you are not yet subscribed the channel, please subscribe it. Thank you for watching.